नमस्कार। अपन नजरिया शो की इस कड़ी में आज हम सब चर्चा करेंगे कोरोना और उसको लेकर डब्ल्यूएचओ की अब तक की पहल की। तो आइए कोरोना के शुरू होने से अब तक की अहम बातों पर गौर करते हैं। शो की शुरुआत डब्ल्यूएचओ के हाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की तरफ से चेतावनी दी गई है कि यही हाल रहा तो बद से बदतर के लिए रहें तैयार। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रॉस घेब्रेयेसस ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस अब भी लोगों का नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन दुनिया भर की कई सरकारें इसे लेकर जो कदम उठा रही हैं उससे ये आभास नहीं होता है कि कोरोना को ये गंभीर खतरे की तरफ नहीं ले रही हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कई देश इसका पालन नहीं कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो डब्ल्यूएचओ की बातों पर आखिर क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिसके तह में जाएंगे तो बहुत सी बातें सामने आएंगी। डब्ल्यूएचओ की विश्वसनीयता पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देशों को नहीं मानकर अपने तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं डब्ल्यूएचओ पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। कोरोना महामारी के बीच क्या क्या लग रहे हैं डब्ल्यूएचओ पर आरोप, और इन आरोपों में कितनी है सच्चाई? आइए करते हैं इसकी पड़ताल। हवा में फैल चुका है कोरोना वायरस। 200 से अधिक वैज्ञानिकों के सबूत देने के बाद पहले आनाकानी और फिर स्वीकार किए जाने पर किए जा रहे हैं सवाल। डब्ल्यूएचओ पर इससे पहले भी इस तरह के लग चुके हैं कई गंभीर आरोप। तो आइए पता लगाते हैं कि क्या क्या आरोप हैं डब्ल्यूएचओ पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच डब्ल्यूएचओ के रोल को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यूं तो कोरोना मामले के शुरुआत में ही भी उस पर कई गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन हवा में फैल चुके कोरोना वायरस की बात को स्वीकार करने में देरी करना उन पर लगे आरोपों को एक तरह से मजबूत करने जैसा है। डब्ल्यूएचओ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही देखें। पहली बार भारी भरकम टीम के साथ डब्ल्यूएचओ प्रमुख डॉक्टर टेड्रॉस घेब्रेयेसस मौजूद रहे, लेकिन एरोसोल की बात को मानने में उन्हें और उनकी टीम को कितनी परेशानी हुई यह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ साफ दिख रहा था। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले व दूसरे सवाल पर कैसे पूरी टीम कॉन्फिडेंस खोती हुई नजर आई। So our first question is from Christine Theodorou from ABC Network USA. Christine, you have the floor. Please go ahead. Hi, I wanted to ask about the New York Times report previewing an open letter to be published by 239 scientists from around the world calling for the WHO to give greater acknowledgement to the risk of an airborne spread of COVID-19. First of all, I wanted to get your reaction to those reports and to see where WHO's research stands in terms of where we are. Thank you for your question. So we have discussed and collaborated with many of the signatories of the articles that you have mentioned over the last few months. And indeed, we discussed the available evidence that has been discussed in these pieces. And also, we received contributions from many of the signatories of these pieces. We acknowledge that there is emerging evidence in this field, as in all other fields, regarding the COVID-19 virus and pandemic. And therefore, we believe that we have to be open to this evidence and understand its implications regarding the modes of transmission and also regarding the precautions that need to be taken. Would you like to add something, Maria? Just to say, thank you, Benedetta. Just to say that yes, we have been engaged with this group since April, when they first wrote to us on April 1st, and we've had an active engagement with them and with many of the signatories on this through different networks. And as
We have said previously we welcome the interaction from scientists all over the world, from many different disciplines. Many of the signatories are engineers, which is a wonderful area of expertise, which adds to growing knowledge about the importance of ventilation, which we feel also is very important. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19, as well as droplet. We've looked at fomites, we look at fecal oral, we look at mother to child, we look at animal to human, of course, as well. And so we are producing a scientific brief on summarizing where we are. We've been working on this for several weeks now. And we've engaged with a large number of groups, epidemiologists and clinicians, IPC specialists, engineers, mathematical modelers, to try to consolidate the growing knowledge around transmission. But we have spoken about the importance of all of the different potential modes of transmission. This is a respiratory pathogen, and so it is important that what we know fits into the guidance that we have, which is why a comprehensive package of interventions are required to be able to stop transmission. This includes not only physical distancing, it includes the use of masks where appropriate in certain settings, specifically where you can't do physical distancing, and especially for healthcare workers. So our focus on the use of masks, of course, is for healthcare workers, and to use airborne precautions where you have those aerosol generating procedures. But we're also looking at the possible role of airborne transmission in other settings where you have particularly closed settings where you have poor ventilation. So we will be issuing our brief in the coming days, and that will outline everything that we have in this area. The next journalist with a question is Jérémy Lange of RFA. Jérémy, please go ahead. Yes, thank you so much. Can you hear me? Yes, please. Go ahead, please. Thanks. I will ask my question in French, if I may. It's kind of a follow-up of the previous question. On the study that's talking about aerosol or transmission by air, shouldn't we be worried by the fact that the WHO has suspended its tests on hydrochloric oxide after the Lancet tests and then backpedaled on that? The WHO went out on a limb on that. But the subject of transmission by air, WHO also gave recommendations here very quickly. And we know that it's the summer and we have air conditioning running full blast in many places. From me, Dr. Allegranzi will answer your question. So I'll answer in English if it's okay. So first of all, I would like to highlight that we encouraged and supported research in this field as well. You highlighted the hydroxychloroquine or the treatments field of research, but we have supported research in this field as well. And indeed, last week, as you may remember, we held an international research meeting where there were active discussions on infection prevention and control and modes of transmission. And our group, together with the experts who are part of it, really highlighted the importance of research in the field of different transmission routes, and in particular through droplets of different sizes, and understanding really what is the relative importance of this. And also understanding the dose of the virus that is needed, in particular in this route of transmission that is the aerosol or airborne transmission. So these are fields of research that are really growing and for which there is some evidence emerging but is not definitive. And therefore the possibility of airborne transmission in public settings, especially in very specific conditions, crowded, closed, poorly ventilated settings that have been described, cannot be ruled out. However, the evidence needs to be gathered and interpreted,
and we continue to support this. Regarding the measures that you were talking about, yes, indeed, we do recommend a number of measures like those mentioned by my colleague before, which take into consideration this possibility. In several of our guidance documents, we do recommend as much as possible avoiding closed settings and crowded situations. We do recommend appropriate and optimal ventilations of indoor environments, and also physical distancing, as you know, and when this is not possible, in areas with community transmission of the virus, we recommend the use of face masks, in particular fabric, non-medical masks for the public. So all of this is taken into consideration in our recommendations, as we previously said. Come out with that kind of data. Now, whether that exactly reflects what happens in day-to-day settings and clinical settings, we cannot extrapolate, right? So then you have to take ecological descriptive data sometimes from outbreaks that happen in different settings, which may point in a certain direction, but then you cannot always rule out. For example, it may point to the fact that there could have been limited airborne transmission, but it could also be through fomites or other means. And so the body of evidence continues to grow, and we adapt. And so we do what's called a living systematic review. Every week we update the review based on the latest, and there are hundreds of publications now in the area of transmission. And then we have what's called a guideline development group that considers all of this evidence, and many of the scientists who are authors of that, some of the scientists who are authors on that letter are part of our expert groups and guideline development groups. And they then look at the evidence, and then they have to make a considered recommendation. And we take this very seriously. We are, of course, focused on public health guidance, and so any guidance that we put out has implications, of course, for billions of people around the world. So it has to be carefully considered before it is done. So we want to be as fast as possible and adaptive and responding to the new evidence, and at the same time we have to consider the weight of the evidence. And you mentioned hydroxychloroquine, so very quickly, I think, because we don't want to the reason that we interrupted that trial was because of safety of participants was in question because of a publication which later was withdrawn. But we cannot take a chance, we cannot take a risk with safety of people who are in a clinical trial. And so within a week, when it was clear that there wasn't that evidence, the study then restarted. And as you may know, we completed the hydroxychloroquine arm, and because there's enough evidence now to show that it does not have any impact on mortality in hospitalized patients with COVID. So just wanted to give you an idea of how WHO actually makes guidance, and it's not impulsive, it's not done on a day-to-day basis, but it's a process that continues and will continue, I'm sure, with COVID for the weeks and months to come. यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा अब माना गया है कि कुछ विशेष मामलों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए नहीं फैल सकता है। इसका मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अब इस बात को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए भी फैल रहा है। जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO की बेनेडेटा एलेग्रांजी ने जो कहा उस पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के हवा के माध्यम से फैलने के सबूत तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें रिजल्ट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जगहों में हवा से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां काफ़ी भीड़ हो या फिर कोई जगह बंद हो या ऐसा स्थान जहां हवा ठीक से आ जा रही हो। बता दें कि WHO की नानुकुल व फिर स्वीकार करने से पहले दुनिया के लगभग 32 देशों के वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस बात के सबूत दिए थे कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है।
इसके साथ ही यह अपील की जा रही है कि WHO कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के माध्यम में हवा को भी शामिल करे। इस पर WHO ने सहमति जताने से इनकार करते हुए कहा था कि बिना इसकी पुष्टि के यह नहीं कहा जा सकता कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। यानी इस मामले में भी WHO लीड रोल में नहीं रह सका, क्योंकि जिस बात की जानकारी WHO की तरफ से सबसे पहले आनी चाहिए थी, वह जानकारी 200 से ज़्यादा देशों के वैज्ञानिकों ने पत्र लिखकर बताया कि हवा में फैल चुका है कोरोना वायरस, गाइडलाइंस में बदलाव करें। हालांकि इसमें दो राय नहीं कि कोरोना वायरस मामले में WHO का रोल बहुत अच्छा नहीं रहा है। शुरुआत से अब तक के रोल पर गौर करें तो लगता है वह खुद को लीडिंग रोल में नहीं रख पाया है। अमेरिका तो इस पर चीन परस्त होने तक का आरोप लगा चुका है। इसके कुछ ट्वीट पर ध्यान दें तो पता चल जाएगा कि वह किस तरह इस पूरे मामले में कंफ्यूज रहा है। बीते 14 जनवरी को WHO ने ट्वीट किया कि चीन की शुरुआती जांच में इस बात के संकेत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस इंसानों से इंसान में फैलता है। डोनाल्ड ट्रंप और अन्य लोगों ने इस ट्वीट के जरिए WHO पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि संगठन आंख मूंद कर चीन की बातों पर भरोसा कर रहा है। फिर केवल 8 दिन के अंदर 22 जनवरी को एक ट्वीट में WHO ने एक बयान जारी करके कहा कि वुहान में कोरोना वायरस के इंसानों से इंसानों में फैलने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जनवरी के आखिर में WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। अब फिर कल के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO प्रमुख टेड्रॉस चीन का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि WHO की टीम जांच के लिए चीन गई थी और क्या कुछ कहा उन्हीं से सुनते हैं। Over the past few months, there has been a lot of discussion about the origins of COVID-19. All preparations have been finalized and WHO experts will be traveling to China this weekend to prepare scientific plans with their Chinese counterparts for identifying the zoonotic sources of the disease. The experts will develop the scope and terms of reference for a WHO-led international mission. The mission objective is to advance the understanding of animal hosts for COVID-19 and ascertain how the disease jumped between animals and humans. WHO will continue to communicate the latest scientific advances to the media and general public as we have them. ये तो WHO प्रमुख ने अपनी बात कही, लेकिन उन्हें इन बातों का भी जवाब देना होगा कि चीन में दिसंबर खत्म होने से पहले से ही कोरोना के मामले आने शुरू हो गए थे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को 31 दिसंबर को उसने कोरोना वायरस की जानकारी दी। लगभग उसी वक्त एक डॉक्टर जिन्होंने अपने सहकर्मियों को सॉर्स जैसे किसी वायरस के संक्रमण को लेकर आगाह किया था, उनसे पुलिस ने पूछताछ भी की थी। उस पर आपके पास क्या जानकारी है? बता दें कि वुहान सेंट्रल अस्पताल के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर ली वेनलियांग ने 30 दिसंबर को ही अपने साथी डॉक्टरों को चिताया था कि उन्होंने कुछ मरीजों में सॉर्स जैसे वायरस के लक्षण देखे हैं, लेकिन उन्हें यह कहकर चुप करा दिया गया कि वे लोगों को भ्रमित ना करें। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ली की मौत कोरोना वायरस से हो गई। WHO को इस आरोप का भी जवाब देना होगा कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जन्मदाता आखिर कौन है, चीन या फिर कोई और? इस तरह के सवालों का जवाब निष्पक्षता से देने के बाद ही विश्वसनीयता WHO की वापस आ सकती है। बता दें कि दिसंबर 2019 में मामले सामने आने के बाद से ही यह कयास जारी है कि यह वायरस वहां वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या पास के हुनान सी फूड मार्केट से निकला है। इस WIV लैब में 1500 से ज़्यादा घातक वायरस मौजूद हैं, जो लीक होने पर दुनिया भर के लिए नया खतरा बन सकते हैं। WIV की P4 प्रयोगशाला में इन पर शोध प्रयोग किए जाते हैं। ब्रिटिश मीडिया समूह द मेल की रिपोर्ट के अनुसार भी वुहान लैब की दुर्लभ अंदरूनी तस्वीरें उजागर हुई हैं। तस्वीरें लैब से एक भयावह रिसाव की ओर इशारा करती है, जिसे बीजिंग द्वारा छिपाया गया है। तस्वीरों में वायरस के 1500 अलग अलग प्रकारों को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेफ्रिजरेटर में से एक के दरवाजे पर एक टूटी हुई सील दिखाई देती है। इसमें बैट कोरोना वायरस भी शामिल है। WHO के इस रवैये की वजह से ही अमेरिका ने आखिरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली। सरसरी निगाह से देखें तो 194 सदस्यों वाले संगठन में एक देश के निकलने का सीधा प्रभाव नहीं आता है, लेकिन सिर्फ एक अमेरिका के निकल जाने से करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है असर। लेकिन WHO को सबसे ज्यादा पैसा देने वाला देश है अमेरिका।
डब्ल्यूएचओ के कुल बजट का 15% लगभग $893 मिलियन अमेरिका से ही आता है, यानी सालाना खर्च में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ही देता है। 2021 से यह फंडिंग भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जर्मनी और जापान जैसे देश ही बड़े फंड देने वाले बन जाते हैं, लेकिन अमेरिका के मुकाबले ये बेहद कम पैसा देते हैं। इसलिए डब्ल्यूएचओ को फंड की भी दिक्कत होगी अगर अमेरिका ने हाथ खींच लिया। धन्यवाद।